Hello and welcome to Study IS. Let's take up the first question of the day. So the first question is, consider the following statement about the National Statistic Office. National Statistic Office के बारे में आपको बताना है. It is comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Second, it is comes under the Ministry of Finance. It is comes under the Ministry of Home Affairs or none of the above. तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इज कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. ओके, सो इसका आंसर होगा ए. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो चलिए देखते हैं. सो 2019 तक की अगर बात करें तो जो 2019 तक जीडीपी का जो ये डेटा है ना, इट इज बीन ब्रॉट आउट बाय द सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस सीएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. एंड ऑल्सो देर इज अ वन मोर डिपार्टमेंट लाइक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ, जिसका काम होता था यूजुअली फॉर कंडक्ट रिसर्च ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेशन लाइक द हेल्थ इंडिकेटर, कंजम्पशन बिहेवियर एंड दिस. इस तरीके के जितने भी काम है द एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूज टू कंडक्ट. बट 2019 में मोदी गवर्नमेंट केम इन अगेन पावर एंड देन मर्ज्ड these two offices and then create a new office like NSO, National Statistic Office. And now the all the kind of statistics exercises are conducted by this office like NSO for the government of India. Why this is relevant today? Because it was recently in the news, according to this, that GDP growth is declining from 4.2. So it is a one of the stage जहां हम 11 साल के बाद ऐसी स्टेज पर पहुंचे हैं. तो इसलिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू अगर जीडीपी ग्रोथ देखें, इसका ये फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ये डेटा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 3.1 बताई गई है. सो इट इज अ स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एज यू ऑल नो, द रियल जीडीपी ग्रोथ इज 3.1 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द स्टेज ऑफ द स्टेग्नेशन. और इसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ पिछला डेटा है, यानी अभी तो लॉकडाउन और ये कोविड 19 का ये जो क्राइसिस चल रहा है इसका तो डेटा अभी आया ही नहीं है. ये तो पहले का ही बताया जा रहा है. तो जब पहले ये सिचुएशन है कोविड 19 और लॉकडाउन के पहले की ये सिचुएशन है, वी आर इन द 3.1 जीडीपी एज यू कैन सी. सो अगर लॉकडाउन और कोविड 19 की बात करेंगे तब हम कहाँ पे होंगे, तो ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला है. बट ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसके रीजंस देखते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द जीडीपी केम इनटू दिस. सो दैट इज लाइक डिमोनेटाइजेशन, आप सभी जानते हैं, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, है ना, एंड ऑल्सो द फॉल इन द इन्वेस्टमेंट. बेसिक स्पेशली स्पेशल केस में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है, आप देख रहे हैं लास्ट ईयर ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिक्लाइन हुआ था. So this was the major issues. Of course, there is a decline of the demand and also the increase of NPA means non-performing asset. तो इसका ये कारण था. तो अभी ये लॉकडाउन और कोविड 19 का तो जिक्र हुआ ही नहीं है. तो देखना होगा कि ये कोविड 19 और लॉकडाउन के इम्प्लीमेंट के बाद किस स्टेज पर हम पहुंचते हैं. सो this was the issue. That's why it is relevant today. So consider the following statement. Choose the correct one. Fiscal deficit is the difference between the total revenue of the government and its total expenditure. It's a high, and the second, high fiscal deficit means the government has been spending beyond its mean. So आपके ऑप्शंस हैं A and B both, A only, B only, and none of the above. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ, दोनों आंसर सही है. फिजिकल डेफिसिट मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो जितना भी सरकार को रेवेन्यू हो रहा है, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, सो इस तरीके से जितनी भी उसको इनकम हो रही है, ठीक है, उससे ज्यादा उसका खर्चा है ना, इन फाइनेंशियल ईयर. सो द total expenditure of the government is more than the total revenue assessment of the government is the fiscal deficit is basically. And of course when the high fiscal deficit is there, so it means that the government is spending beyond its means.
So that is the question, because there is an article came into the Hindu, that the physical deficit at 4.6% for a financial year as a revenue sale. So that's why this is relevant today. Now moving to the next question, that which one of the following is incorrect statement. So you have to tell that which one of the following statement is a incorrect. Okay, so the first statement is national carrier service is being implemented by Ministry of Labor and Employment. Second one, it is launched in 2015. And third one, both are incorrect. And fourth, none of the above. तो जल्दी से बताइए which one of the following is incorrect statement. So friends, इसका आंसर होगा none of the above. Both statements are correct. Let's see. So the National Career Service is the project is launched by the Ministry of Labor and Employment in the 2015, and it was basically a portal for a job seekers. And today it is relevant because the recently there is an article came into the Hindu that the center launches the online skill training courses, because according to the NCS, means National Career Service, for us job seekers there is a skill training program is running with a partnership of TCS. And almost according to ministry that there is a 1 crore, more than 1 crore job seekers are currently registered on this portal. So that's why this is relevant today. Now moving to the next question, that according to the article 12 of the Constitution of India, the term state defines what? Government and the Parliament of India, government and the legislature of each of the state, all the local other authority within the territory of India or under the control of the government of India. And fourth one, United Nations. So you have to select the correct answer code. So first is one only, second is one and two only, third is one, two, and three, and fourth is none of the above. So friends, इसका आंसर होगा वन टू एंड थ्री ओनली. चलिए देखते हैं. As I also told you in my polity lectures that there is a article 12 defines the term state, that what kind of organization come into the article 12 in the definition of the term state. And there is also high, according to the Delhi High Court, that the United Nations is a not a state, article 12. So that was the static part. So you have to keep in mind that United Nations is not the part of the state. Okay. Now, moving to the next question, consider the following statement about the Uniform Civil Code. So, the first statement is a Uniform Civil Code is a one law for the entire country, applicable to the all religious communities in their personal matters like marriage, divorce, inheritance, and adoption. And the second statement, Article 44 of the Constitution lays down that it shall be the obligation of the government or a state to secure the Uniform Civil Code for a citizen throughout the territory of the India. So which one of these statement is correct? The option is one and two, one only, two only, or a none of the above. So guys, इसका आंसर होगा one only. Yes, because Uniform Civil Code is the law for the entire country. Like it is applicable. ये सिर्फ एक कानून होगा सभी के लिए, irrespective of their religion, creed, caste, है ना? So that will be come into the picture like one law for a one nation. So that is kind of things for marriage, divorce, inheritance, and adoption. These are kind of things will come into that. But according to Article 44, that is not obligation on the state. Just because it is the part of the DPSP, directive principle of the state policy. So only the when the situation is there in the country, that the government or a state feels like there should be a law or a uniform civil code that should be exist in the country. So at that time, while making the laws or any kind of act for the country, like in this matter, they have to keep in mind the Article 44 like a uniform civil code. That's why it is a not an obligation, because it is a part of the DPSP only. That's why the uniform civil code is important. अगर आपको इसे डिटेल में समझना है, so please search study IAS uniform civil code by Vivek Misra.
you will get the complete case of the साहबानो and what is यूनिफॉर्म सिविल कोड, what does it mean, साहबानो का क्या केस था, तो ये सब आपको डिटेल में मिलेगा। तो अगर आपने ये अभी वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज जल्दी से जाइए इस वीडियो को देखिए स्टडी इस पे, आपको कंप्लीट एंटायर यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कंप्लीट साहबानो केस की डिटेल मिल जाएगी, तब आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।